This meeting is being recorded. So this is where we ended or concluded our chapter, and we did some past papers as well. We did homework in our class, and अब मुझे आपको yearly past papers की तरफ अच्छा एक सवाल किया भी हमने yearly past paper का. Cool. So let's find out more questions of scalar vectors. So if you go to May June 2016, paper 2-3, question 1. Sir, your screen is not shared. Oh, sorry. Thanks for informing. So, May, June 2016, 2-3, question 1. This is our reference. A list of quantities are either scalar or vector, as shown. Okay. So, complete figure 1.1 to indicate whether each quantity is scalar or vector. Need your help. Walaikum assalam, Efra. Walaikum assalam, Amatul. Energy is scalar. Yes. Energy is scalar. Momentum. Vector. Vector. Power. Scalar. Scalar. Scalar, sir. Okay, power Scalar. work upon time, ma'am. Work and energy have same units. So power work upon time और work और time दोनों scalar है. Time scalar. Scalar. Wait. Vector. 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 Yes. So 2 marks. I don't know how examiner will distribute the mark distribution. Maybe if 3 are correct, you get 1 mark. And if all 5 are correct, you get 2 marks. This is how maybe the marks are distributed. Okay. A girl runs 120 meter. Due north. Okay. यानी north किस तरफ होता है? इस तरफ. She then runs 80 meter due east in 12 seconds. अच्छा time भी दिया हुआ है. Okay. Sketch vector diagram to show the path taken by the girl. Label her resultant displacement. बोल रहे vector diagram बनाए to show the path taken by girl and draw and label her resultant displacement. So right now we have to focus on these 2 quantities जिन्हें मैं थोड़ा सा highlight कर देता हूँ. वैसे तो highlight किया हुआ है और मजीद कर देता हूँ so that you don't worry about the time given क्योंकि उसने displacement की बात की है and the unit of displacement is vector, sorry, meter. Cool. So beta, we need to make a scale. That scale जिसमें 120 meter और 80 meter दोनों accommodate हो जाए. So maybe a sensible scale is, let me see how much sir. scale do we have. Yes beta. सर मैं कह रहा हूँ कि आप ये जो डॉक्यूमेंट है जो आप अभी सॉर्ट कर रहे हैं सर ये आपने शेयर किया हुआ है इस पे जो ड्राइव है. जी पिछली क्लास में किया था. क्या ये किस नाम से है? ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे ना. नहीं सर ये जैसे डॉक्यूमेंट किस नाम से है वहाँ पे? ये डॉक्यूमेंट किस नाम से? फिजिक्स P2 AS रॉ. सर ये देखो, मैंने खोला है सर लेकिन ऐसा इसके अंदर होगा. कुछ भी नहीं है, मतलब इसके अंदर 2 पेजेस है बस. इसमें सर ये जो पर्पल वाला डॉक्यूमेंट है ये मैंने खोला है लेकिन ये इसके अंदर ये खाली है. प्लस
बेटा ये ईयरली पास पेपर्स हैं, और इन ईयरली पास पेपर्स में से हम ढूंढ ढूंढ के सवाल कर रहे हैं। तो यस, बहुत पेजेस खाली मिलेंगे, बिकॉज वी आर जस्ट एट द एंड ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल एंड से चले ना 2018 से, देखिए मैं बिल्कुल एंड वाले पहले उठा रहा हूँ, ये देख रहे हैं, वी आर एट पेज नंबर 665। तो आप यहाँ पे जाएंगे, आफ्टर दिस क्लास आई विल अपडेट, या पिछली क्लास में आपको पेज नंबर 703 फिल इन मिलेगा। तो जो जो टॉपिक्स हमने किए हैं उसके मुताबिक वी आर मूविंग टूवर्ड्स ईयरली पास पेपर, और जो पास पेपर सामने आ रहा है हमारे टॉपिक के मुताबिक हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सर मेरा जो डॉक्यूमेंट है ना उसमें मतलब कि ये सारे पेजेस है ही नहीं। मतलब जो मैंने खोला है ना पीडीएफ, वो उसमें सिर्फ 3 पेजेस हैं। 700 पेजेस जो हैं वो मेरे डॉक्यूमेंट में है ही नहीं। लेट मी सी। वेयर इज CIT? दिस इज, बड़ी फाइलें थोड़ा टाइम लगाएगी ऑन होने में। मीनवाइल मैं साइड में अपना लेक्चर तो कंटिन्यू सर करूँ। ये होगा कि मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम होगी। जी बेटा, सर मैं कह रहा हूँ हो सकता है मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम हो कि मेरी तरफ से प्रॉपर लोड नहीं हो रही हो। नहीं ये देखें हम ऊपर देखें, बल्कि मैं आपको, नहीं नहीं सही है बेटा। अब मैं आपको अगर एंड पे लेके जाऊं, ये मैंने आपकी ड्राइव का लिंक खोला है, 703 था ना पेज नंबर, जो लास्ट क्लास में किया है हमने। ये देखें, हुआ है। ठीक है, एंड में जाएं, मेरी कोशिश ये होती है मैं आपको लेटेस्ट पेपर्स करवाऊं। ठीक है, इसी तरह इसके बाद आप एयर में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको सॉल्व हुआ हुआ मिले। ठीक, ठीक है बेटा। शायन, थैंक यू सर। शायन कुछ इंडिकेशन तो दो, मेरा दिल बैठे जा रहा है। सर आप मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। सर आई टुक 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। हाँ, सेंसिबल रिजल्ट स्केल है ईमान। तो अकॉर्डिंग टू ईमान, एज ईमान सेड दैट वी कैन टेक आवर स्केल, बट एक मसला है, एग्जामिनर बहुत ही कंजूस है। ठीक है, तो लेट्स मेक स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, सिमिलरली 80 मीटर, इसके बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, एंड 120 मीटर इसके बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो लेट्स ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ 120 मीटर ड्यू नॉट, दैट इज 6 सेंटीमीटर अपवर्ड। 6 सेंटीमीटर अपवर्ड। Let me see if this is a perfect 90 degree. Yes, it is. So we are drawing a vector of what? 6 centimeters. हेलो हेलो। तो ये देखें,
तो ये पहली डिस्प्लेसमेंट आ गई विच इज 120 मीटर नॉर्थ। ठीक है, अब चलें दूसरी डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं। दूसरी डिस्प्लेसमेंट किधर है? 80 मीटर्स ईस्ट। ईस्ट होता है टूवर्ड्स राइट, एग्जामिनर ने बताया हुआ भी है। तो 80 मीटर इज 4 सेंटीमीटर। ठीक, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा। ओके सर, वो माइक का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जैसे। तो सर मैं कह रहा था ये कौन सा पेज नंबर है? एक मिनट देख के बताते हैं। ये दूसरा वेक्टर आ गया हमारे पास विच इज 80 मीटर्स ईस्ट। ठीक है, पेज नंबर 664। ठीक है, अब what we need to do, we need to draw our resultant. ठीक है, and resultant should start from the tail of first vector to the tip of second vector according to 52 rule। ये हमारा resultant है बेटा। हम क्या करेंगे, इस resultant vector का मैग्नीट्यूड मेजर करेंगे। थोड़ा सा और बस स्केल करना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है। ज्यादा हो गया। This will do. Yes, So is it 7.2? exactly 7.2। ठीक, तो our resultant vector is 7.2 centimeter. Now we need to convert it according to our scale। हमने बोला था 1 सेंटीमीटर 20 मीटर के बराबर है, तो 7.2 सेंटीमीटर resultant के बराबर होगा। What we'll do, we'll cross multiply। ठीक है, तो R will be equal to 20 multiplied by 7.2 divided by 1, and the answer we get is 144. 144. 144 मीटर। सही है बेटा, so this is how we did। Perfect। चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट फॉर द गर्ल द एवरेज स्पीड। बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? Total distance by Total total distance over total total time. Total time. time. एवरेज स्पीड इज total distance over total time। So initially she run 120 meters, then 80 meter, and how much time she took? 15, then 12। The answer will be 7.41. 7.41। you round up होकर 7.4 हो जाए। Okay, now what they are saying, आपसे बोला जा रहा है
the magnitude of average velocity and its angle with respect to the direction of initial path. Okay. Magnitude of average velocity. Beta, we have found out the displacement. ऊपर निकाली हमने displacement. This is the displacement. ठीक है? And what we'll do, displacement को total time से divide करेंगे. That is how we'll find out average velocity. The velocity will be equal to displacement upon time. And the displacement we got was 144. And the time we have is 27 seconds. So 144 divided by 27. 5.3 meter per second. The magnitude of velocity is 5.3. And the angle, they are asking about the angle. So let's find out the angle using protractor. See how much angle from x-axis? 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. So 56 degrees with respect to x-axis. ठीक है बेटा? 56.3 degrees. इतना स्पेसिफिक कैसे? ईमान कैलकुलेशन की है कोई? So I'm getting 56 too. 10 से, okay. You can do that as well. तो डायरेक्शन हमारे पास क्या आ रही है? 56 डिग्री. उसको भी राउंड ऑफ करके दो सिग्निफिकेंट फिगर पे ईमान 56 करना होगा. ठीक है? So this is where we completed this question. सही है बेटा? Done? Yes, sir. जी सर. Perfect. Perfect. So let's see और मजीद स्केलर्स एंड वेक्टर्स के डोमेन में कौन से सवाल आते हैं. This is from October, November 2015 P22. Question 1. The frequency of the wave is this. Calculate the wavelength. Okay, in picometer. सुन लेते हैं बात इसकी, कोई मसले की बात नहीं. बेटा याद करो ओ लेवल्स का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और जनरल वेव प्रॉपर्टीज. इसमें हमने एक फॉर्मूला बनाया था V equals to F lambda. Remember? Yes, sir. So we are given frequency. We want wavelength. And X-ray is a member of electromagnetic spectrum. And each electromagnetic spectrum member travels with the speed of Light. That is 3 exponent 8 meter per second. ठीक है? Okay, let me see if so we want wavelength. Lambda equals to V upon F. V is 3 exponent 8 and F is 4.6 exponent 20. Let me bring my calculator. 3 exponent 8 divided by 4.6. 6.5 times 10⁻13. Yes. 6.52 into 10 raised to the power minus 13. But we need answer in pico. And pico is what? 0.6 into 10 to the power. G beta. Pico is at 10 to the power minus 12. So with calculator,
How do we convert it into pico? Shift and Press ring. shift ENG. ठीक है, तो शिफ्ट दबा के ENG, तो आपकी पावर देखें ऑलरेडी -12 में आ गई. That is how you wrote 0.652 into 10 raised to the power -13. Write your answer in two significant figures, -12 value. So 0.652 एक्सपोनेंट -12 क्या हो गया? पिको, और मीटर ऐसे ही लिख दिया. तो देखें, picometer is already written. You don't have to write picometer. You just write the value as Ifra said, 0.65 in two significant figures. Which page? 582, Cheyenne. Okay. Let's move ahead. The distance from Earth to the star is this. सही है. चलो थोड़ा सा इस सवाल को चार चांद लगाते हैं. वैसे तो अर्थ और स्टार की बात हो रही है, चांद कहीं पे नहीं आया, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं. नॉस्टैल्जिया फील आने वाला है भाई आप लोगों को. सर क्या बात है ना? बड़ा मजा आता सर. ये वाहिद चैप्टर है जिसमें से बहुत मजा आया था पढ़ने में, लाइक बीइंग ऑनेस्ट. ऐसा ही है, बड़ा मजे का चैप्टर है. माय पर्सनल फेवरेट. तो ये आ गई हमारी अर्थ. एंड स्टार भी लेकर आते हैं भाई. देख लो, रेड जाइंट लाऊं क्या लाऊं? चलो अपना सूरज ले लेते हैं. तो ये आ गया हमारे पास स्टार. लेट मी डिक्रीज द साइज ऑफ अर्थ compared to star. So what they are saying कि अर्थ से स्टार तक का फासला हमें गिवन है. दैट इज 8.5 into 10 raised to the power 16 meter. We know the speed of light in vacuum. अरे क्या याद दिला दिया फीफा. आई मीन मेमोरी लेन पे चला गया मैं तो. रमजान में सुबह 4 बजे क्लासेस, ऐसे 7 बजे होती थी. सर फिर करना चाहिए, सही बताओ. है ना? हाँ, करेंगे करेंगे. हेक्टिक था लेकिन बड़ा मजा आया. One of the best times. Okay, Yeah, that's true. so we know the distance, we know the speed light takes. ठीक है? क्या पूछ रहे हैं आपसे? Calculate the time for light to travel from star to earth in gigaseconds. तो speed होती है distance upon time. Time will be equal to distance upon speed. So time will be equals to distance is 8.5 into 10 raised to the power 16 over 3 exponent 8. Okay. ईमान ने पूरी कैलकुलेशन दी है. So that calculation shows we have 0.28 into 10 raised to the power 9 seconds, which is 0.28 gigaseconds. ठीक है?
And Afifa got that too. Ifra got that too. Cool. The list of the following list contains scalars and vectors. Underline बोला है, so I'll not highlight, I'll underline all scalar quantities. जी बेटा, किस किस को करूं underline? Mass, temperature, Acceleration. Mass, temperature, power. power, acceleration, force and weight are vector quantities. Yes. ठीक है? Okay. Boat is traveling in a flowing river. As shown the velocity vectors for the boat and the river. बेटा ये बोट की वेलोसिटी है और ये रिवर की वेलोसिटी है. ठीक है? तो boat is traveling towards east with 14 meter per second, while water is traveling at 60 degrees from east at 8 meter per second. So we have two vectors, 14 and 8. Let me see how much space we have. The velocity of the boat is वही बात बताएगी जो ऊपर हमने पढ़ी है. Okay, we don't have that much space, तो हमें स्केल क्या बनाना होगा? 1 centimeter equals to 2 meter per second. अगर स्केल ज्यादा होता, आई मीन जगह ज्यादा होती, तो 1 centimeter equals to 1 meter per second कर लेते. ठीक है? This will be our scale. On figure 1.1, draw an arrow to show the direction of resultant velocity of the boat. Figure 1.1 में हमने arrow बनाना है. Draw an arrow to show direction of resultant velocity of the boat. जी बेटा. सर ये जो आपने हाथ में जो ग्लव पहना हुआ है ये आपने कहाँ से लिया है? दराज से मंगवाया था. सर इसका नाम क्या है? ये तो नहीं याद है यार. आई थिंक मतलब इसको बोलते क्या? आई थिंक ये नाम है. ओके सर, Yes. थैंक यू सर. ठीक है? जी सर, थैंक यू. तो फिगर 1.1 पे we need to show the direction of resultant. अब देखो बेटा, अगर मैं ये वेक्टर का डमी ज्वाइन कर दूं इस वेक्टर के साथ, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां बनेगा? लाइक दिस. ठीक है? ये हमारा ब्लू वाला इज रिजल्टेंट. ठीक है? तो अब ये मिटा दें. दिस इज आवर रिजल्टेंट. या तो इसके साथ बना दें रिजल्टेंट लाइक दिस. ठीक है? या तो उसके साथ बना दें. उसने बोला है फिगर 1.1 में बनाओ, तो कहीं पे भी बना दें. सही है बेटा? ईमान इज सेइंग 9.2 मीटर पर सेकेंड. चलें देखते हैं. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी. डायग्राम बना ली पूरी. क्या बात है यार. सो लेट्स ड्रॉ द वेक्टर अकॉर्डिंग टू आवर स्केल. स्केल है हमारा, इस साइड में कहीं लिख रहा हूं. तो दैट वे 14 मीटर पर सेकेंड 7 सेंटीमीटर का हो गया, एंड 8 मीटर पर सेकेंड 4 सेंटीमीटर का हो गया. पहले बनाते हैं 7 सेंटीमीटर का वेक्टर. This is how.
and this represents 14 meters per second. Now we have to make sure हमारे पास 60 डिग्री का एंगल आए, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है. So I'll place my protractor in opposite way and I'll measure 60 degrees. So this is where we get. सही है. अब यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, अपना दूसरा वेक्टर. Let me थोड़ा सा और मूव करना होगा. So maybe now we are, yes. So what do? We need to make a vector of 4 centimeters. So I am starting from 6. That means 1, 2, 3, 4. ठीक है. तो ये हमारे पास with x-axis 60 centimeter का वेक्टर आ गया, and this is our speed of the flowing water, that is h ms minus 1. सही है. साथ साथ अगर आप चाहें, you can also write in centimeters. Now we have to draw our resultant. In the resultant, we should start from the tail of first vector to the tip of second vector, like this. ठीक है. चलो, let's measure it. Bit more into your So is it 6.2? picture. Yeah, 6.1. मेरा 6.1 आ रहा है. Let me, हाँ, exact 6.1 आ रहा है. ओ 0.1 0.2 का फर्क चलता है. ठीक है. तो चलो, this is our 6.1 centimeter. So let's convert it according to our scale. 1 centimeter 12.2? equals to 2 ms minus 1. जी बेटा, 12.2? 12.2 exactly.
and in two significant figures it will be only 12. सही है? Cool. टेस्ट कब प्लान करें इसका? Whenever you say. 2 वीक के बाद सही है? I mean last week of September. Sorry, last week of September. So that you get enough time for your self-study as well. Cool. चलो और मजीद देखते हैं which questions can we attempt in the domain of scalars and vectors. ये देखो, ये भी कलाकारी की हुई है हम लोगों ने, खूबसूरत। अरे मैंने एक काम किया, you know what I did? I have ordered a question. वो खैर आप ए लेवल्स वालों के लिए काम नहीं आएगा क्योंकि माशाल्लाह आप बड़े बच्चे हो गए और अब आपको यूनिट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो I ordered a question for my O levels students. And the question is there's a website known as warehouse.pk और उस warehouse.pk पे अब जब भी बच्चा यूनिट लगाना भूलेगा ना, क्वेश्चन पड़ेगा मुंह पे उसके ऑनलाइन क्लास में। क्या बात है? कूल। अच्छा भाई, तो ये देखें, the question we have right now is October November 2014 P22. Question 1, and what we are being told, Young's modulus of a metal wire is 1.8 exponent 11 pascals. Okay, Young modulus की value given, and Young modulus is represented by capital E. Wire is extended, okay, and the strain produced is this. But आपको strain की value भी दे दी है. Strain does not have any unit. Calculate the stress. Stress क्या होता है? ये in gigapascals. Giga क्या होता है? 10 raised to the power 9. Cool. तो अपनी सारी वर्किंग हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर में कर ली है. So now Young's modulus is equals to stress over strain. ठीक है? We need to find out the stress. सब्जेक्ट बनाए Young's modulus into strain. Young modulus ये is वाला चैप्टर हमने 1.8. मतलब स्टडी कर लिया है, ये यंग नहीं, मॉडल। ये हमारा 6th चैप्टर है या 5th चैप्टर है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के नाम से। तो सर ओके ये भाई, हम इसके सवाल कैसे कर रहे हैं फिर? फॉर्मूला पता है हमें, बेस यूनिट्स में हमने फॉर्मूला स्टडी किया था। अच्छा, ओके सर, क्योंकि मैंने लेट मी असल में सी। ज्वाइन थोड़ा लेट किया ना, तो मेरी पिछली कोई 12 क्लासेस मिस हैं। तो अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मैं किस तरह कवर करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो इस वीकेंड भी मैंने 2 ली थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं 2-2 करके ही ले रहा हूँ। अच्छा, हाँ सही है, आराम आराम से चलें। तो यस। अमल का जवाब है 0.1477, ईमान इज सेइंग 180 गीगा पास्कल। चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8.2 एक्सपोनेंट माइनस 4।
कैलकुलेटर मेरा बड़ा तंग कर रहा है, मैं अपने कैलकुलेटर में दूसरे वाले में करता हूँ। 1.8 exponent 11 multiplied by 8.2 minus 4. It's अमल वाला जवाब 0.1476 exponent 9. दो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या हो जाएगा 0.15 और एक्सपोनेंट 9 हो जाएगा गीगा, यूनिट है पास्कल। जस्ट राइट 0.15। ठीक है बेटा। Okay, sir. नहीं अमतुल, आपने जो गलती की है वो एक्सपोनेंट 6 मेगा होता है, इट्स नॉट गीगा। ओके, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 टेराहर्ट्ज। बोलने वेवलेंथ माइक्रोमीटर में निकालें। माइक्रो क्या होता है एक्सपोनेंट -6। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दैट मींस बाय डिफॉल्ट वी नो द स्पीड as 3 exponent 8 ms minus 1. So once again v equals to f lambda, lambda equals to v upon f. And then 3 into 10 raised to the power 8 divided by 12. Tera क्या होता है 10 raised to the power 12. Okay, let me see man. 3 exponent 8 over 12 exponent 12. इसमें निकालनी है माइक्रोमीटर में, तो आ गई बेटा 25 एक्सपोनेंट -6। हाँ, आपका भी जवाब ठीक है ईमान, बस इसे माइक्रो में कन्वर्ट करेंगी तो ये 25 एक्सपोनेंट -6 हो Sir, जाएगा। it'll be 25 times 10 to the power 6 minus 6. ये तो 10 की पावर -6 माइक्रो हो गया, मीटर है फिर जस्ट राइट 25। State the name of the region, the electromagnetic spectrum for this frequency. ओके, वैसे ये पार्ट अभी आपने पढ़ना है, ये तो अभी सिंपल कैलकुलेशन थी तो हम डील कर रहे थे। तो व्हेन आई विल टीच यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पूछो तो वेव्स के चैप्टर में मैं एक टेबल पढ़ाऊंगा आपको। दिस इज आवर टेबल, ठीक है, और हमारा आंसर क्या है 25 माइक्रोमीटर। ठीक है, 25 एक्सपोनेंट -6, तो एक्सपोनेंट -6 में कौन है इंफ्रारेड। ठीक है, तो आवर वेव इज बेसिकली एन इंफ्रारेड। तो ये टेबल जो है ना, आई टेल यू व्हेन वी स्टडी वेव्स, ये टेबल आपको याद करना होता है। ठीक है, एंड जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका गेम होता है। तो वी हैव 25 एक्सपोनेंट -6, तो इंफ्रारेड इज द वन जो एक्सपोनेंट -6 में डील कर रहा है, तो इट्स इंफ्रारेड। चलो देखते हैं, ऑब्जेक्ट बी इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, the two force act on B is on this horizontal plane। दो फोर्सेस लग रही हैं ऑब्जेक्ट बी पे, एक ये फोर्स है एक ये फोर्स है। A vector diagram for these force is shown to scale। बेटा टू स्केल का मतलब क्या होता है, you can take measurements from
diagram. This is what is meant by to the scale. सही है, आप डायग्राम से मेजरमेंट्स ले सकते हैं. थोड़ा सा ऐसे डार्क कर देता हूँ आई थिंक. सही है, पढ़ने लायक है, बस ठीक है, ठीक है. ठीक है. whenever you see to the scale, this means आप from the diagram measurements ले सकते हैं. अच्छा बेटा, kindly send message to chat hyphen questions. ठीक है. And if you are new to the class, you can get registered by sending message to Sir Salman Hashmi on WhatsApp. And tell him that we had a wonderful class. Okay. So, a force of 7.5 Newton towards north and a force of 2.5 Newton at 30 degrees north of east act on B. The mass of B is 750 grams. Okay. On figure 1.1, draw an arrow to show the approximate direction of the resultant of these two forces. Okay. तो बेटा देखें, एक वेक्टर का टिप और दूसरे वेक्टर का टिप आपस में ज्वाइन हो रहा है. ठीक है. सो क्या होगा, अगर मैं आपको क्लोनिंग करके दिखाऊं, तो एक वेक्टर की टिप से दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करना होगा. एंड रिजल्टेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर. तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा. ठीक है. तो नाउ इसको थोड़ा बीच में बना देते हैं, लाइक दिस. ठीक है. और यू कैन जस्ट फॉलो पैरेललोग्राम मेथड. एक वेक्टर के सामने उसका पैरेलल वेक्टर बनाया, इसके सामने इसका पैरेलल वेक्टर बनाया, ये देखें लाइक दिस. ठीक है. एंड resistance starts from both tails to both tips. You can also do this. So what they said on figure 1.1, draw an arrow to show the approximate direction of resultant of these two forces. तो इसको लेबल कर दें पूरा रिजल्टेंट. ठीक है. अच्छा जी. Show that the magnitude of the resultant of two forces, or show that the magnitude of resultant force on B is 6.6 Newton. चलें देखते हैं. Let's measure. Let me bring my ruler. Okay, it's perfectly vertical. So this vector is how much? 7.5. Am I right? So 7.5 centimeter or 7.5 Newton. Yani 1 Newton, 1 centimeter equals to 1 Newton. Or this must surely be 2.5 centimeter. चलो देखते हैं. सर जी. सर आप वो जो फिजिक्स का हमारा एएस का वो डिस्कशन ग्रुप कब बनाएंगे?
यार बस जिंदगी में थोड़ा सा टाइम मिल जाए। मैं आप लोगों के करंट ग्रुप को ही वो कर देता हूँ, क्या कहते हैं, ओपन फॉर ऑल। आई मीन यू कैन सेंड मैसेजेस डायरेक्टली। ये सपोर्ट ग्रुप का अपना मजा है। बस एज आई सेड, ये 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, चलें अब इसका रिजल्टेंट बनाते हैं। और रिजल्टेंट कैसे बनेगा बेटा? व्हाट वी नीड टू डू, मैं यहाँ पे टिप टू टेल रूल फॉलो कर रहा हूँ, सही है। और टिप टू टेल रूल फॉलो कैसे कर रहा हूँ बेटा, ये देखो। मैं 7.5 सेंटीमीटर का वेक्टर पहले ये अरेंज हुआ है, यहाँ बना रहा हूँ मैं। व्हाट आई एम डूइंग इज 2.5 न्यूटन का वेक्टर बना दिया मैंने इस तरह। एंड देन व्हाट आई डिड, I did wrong. सर ये जो आपने ये जो फाइल शेयर की है, ये P2AS रॉ के नाम से, जी तो सर इसके अंदर किस ईयर से किस ईयर तक पेपर है? यार ये है 2010 से 18। ओके सर। और सर 18, सर ये ईयरली है ना, टॉपिकल तो नहीं है? हाँ, ऑल वेरिएंट्स। ओके सर। तो ये एक वेक्टर बना दिया हमने। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड आवर डायग्राम। ठीक है, अब जरा ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है ना, इसको मेजर करना है, सही है। तो इस तरह टिप टू टेल रूल, सॉरी पैरेललोग्राम मेथड से तो हमने अपनी डायग्राम कंप्लीट कर ली। तो let's see, थोड़ा सा और। लेट्स मेजर, इट्स अराउंड 6.7। आप लोग अपनी मेजरमेंट बताएं, क्या मेजरमेंट है। एंड इफ यू डोंट हैव पास्ट पेपर्स, do purchase, read and write publication past papers. I'm not their brand ambassador, बस अच्छे उनके पास पेपर्स होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं। अराउंड 6.5, ओके। एनी आंसर्स apart from 6.8? I'm getting 6.7। चले, 0.1 0.2 सेंटीमीटर की रेंज चलेगी। तो ये आ रहा है हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर। हाँ, अकॉर्डिंग टू माई स्केल 1 सेंटीमीटर जो हमने देखा 1 न्यूटन के है। 6.7 सेंटीमीटर, 6.7 न्यूटन। आप अपना आंसर लिखिएगा जो आपका आ रहा है। ठीक है, तो शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑन रिजल्टेंट फोर्स इज 6.6 न्यूटन। चलिए, मेरा 6.7 आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके 6.6 कर देंगे, बट वी आर क्लोज टू आवर आंसर। ठीक है,
तो जो भी हमारी वर्किंग थी, यस टॉपिकल्स बेटा हुदैफा, सर आई हैव रीड एंड राइट बट अच्छा, ये इसका रेफरेंस क्या है? 2014। तो हो सकता है आपके पास मोस्ट लेटेस्ट पास पेपर जो रहा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स। ओके, magnitude of acceleration of B produced by this force. ओके, आसान सवाल है। सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए, तो ए किसके बराबर जाएगा? सिग्मा एफ ओवर एम। वी हैव आवर रिजल्टेंट फोर्स एंड हमें मास भी ऊपर बताया था कहीं, ये रहा 750 ग्राम्स इन किलोग्राम, 6.75 kg. Yes, what's an answer? We need to have topicals right now for the time being. एंड में एलडीज की जरूरत पड़ती है। So 6.6 divided by 0.75, 8.8, ठीक है। अब बोल रहे हैं डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ 7.5 न्यूटन फोर्स। ओके, हमेशा याद रखें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होती है, मतलब wherever the resultant force is, acceleration will be there, ठीक है। That means 7.5 न्यूटन की फोर्स है हमारी ये, ठीक है, और हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ये। We need to find out this angle, ठीक है। Let's see using protractor, since we have a scale diagram, क्या आंसर आ रहा है? 19 डिग्रीज, ठीक है। तो 10, 15, 16, 17, 18, 19. So just label it here and 19 degrees. And this is where we have completed our topic or question. So as I told you, this will be our last class on chapter 1. So we are done with the chapter 1. Inshallah, 2 weeks ke baad, I mean, the last week of September, we'll be having the test of this topic. Or from next class, that is on Wednesday, we are going to start new chapter, that is kinematics. Okay, beta? Yeah. Perfect. Cool. So this is it. This is what I've planned for today's class. Alhamdulillah, we executed our plan. Isn't it Thursday? Yeah, Thursday to bola hai. Thursday nahi bola. Thursday 10 to 11. Yes. So inshallah, we'll have our next class on kinematics. Wednesday bola? No. Sorry. Monday and Thursday we have time for our class. चले, सर ख्याल रखिए। हाँ बोलो। सर मैंने पूछना था कि ए लेवल फिजिक्स की तैयारी कैसे की जाए, मतलब ए स्टार लेने के लिए घर कैसे में भी की और जाए? स्कूल। ओके, देखो, सबसे पहले आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करें। व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ए लेवल्स इज डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन्ड हो गए, नॉट लाइक दैट कि आप टाइप कोट पहन के घूम रहे हैं। आप डिसिप्लिन इस सेंस में हो गए दैट यू आर नॉट
डूइंग, क्या कहते हैं उसे, आज का काम कल पे ना छोड़ें, जो आज पढ़ा है ना वो आज ही रिवाइज करें, एंड अकॉर्डिंग टू द थिंग्स यू हैव अंडरस्टूड उसके मुताबिक पास्ट पेपर्स की अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करें। तो अगर आप ये पैटर्न बनाना शुरू कर देंगे तो या रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। Okay, sir. Thank you. Inshallah, वेलकम। I will try to like do this. इंशाल्लाह, यस। चले, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। वापस Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।